हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था भक्ति सिंथेसिस या रिलीजियस सिंथेसिस, जहाँ पे हमने देखा था कि कैसे लोग भक्ति भावना से जुड़े, कैसे लोगों ने सारे भेदभाव मिटाकर चीज़ों को किया और उनके पीछे कौन थे उनकी हेल्प करने के लिए या उन्हें गाइड करने के लिए। तो अब हमें उसी के क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं। सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द रिलेटेड वर्ड। सो ओके, राइट रिलेटेड वर्ड। महात्मा बसवेश्वर, कर्नाटका संत मीराबाई, ये कहाँ के थे? ये थे राजस्थान। रामानंद, नॉर्थ इंडिया। चैतन्य महाप्रभु, बंगाल। श्री चक्रधर, महाराष्ट्र। शंकरदेव, असम। अब हमें क्या करना है? मेक अ चार्ट टू शो पीपल एंड वर्क रिलेटेड टू। अब हमें चार्ट बनाना है जहाँ पे हम पीपल और उनके वर्क को रिलेट कर सके। भक्ति मूवमेंट, सबसे पहले हम चार्ट बनाते हैं। भक्ति मूवमेंट का। ठीक है, तो भक्ति मूवमेंट में हम पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स क्रिएट कर देते हैं इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लाइंस कर देते हैं, 1 एंड हियर 2। ठीक, थोड़ा ये इधर आ जाएगा तो बेटर होगा। अब हमें लिखना है, तो सबसे पहले संत और आचार्य। संत और आचार्य, फिर यहाँ पर आ जाएगी उनके रीजन और फिर यहाँ पर आ जाएगी उनका वर्क, मेजर वर्क और कंट्रीब्यूशन। सो फर्स्ट है हमारे पास फर्स्ट वी हैव रामानुज। ये है साउथ इंडिया के। इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या था? स्ट्रेंथन भक्ति फिलोसॉफी। नेक्स्ट संत रामानंद, नॉर्थ इंडिया, स्प्रेड भक्ति अमॉन्ग कॉमन पीपल। स्प्रेड भक्ति अमॉन्ग कॉमन पीपल। संत कबीर, नॉर्थ इंडिया, preached equality, religious harmony. Next चैतन्य महाप्रभु, बंगाल। प्रमोटेड कृष्णा भक्ति। नेक्स्ट मीराबाई, राजस्थान। डिवोशनल वर्सेस ऑन कृष्णा। नेक्स्ट सूरदास, नॉर्थ इंडिया, सूरसागर।
तुलसीदास, नॉर्थ इंडिया, रामचरितमानस, नरसिंह मेहता, गुजरात, वैष्णव भक्ति, गुजराती पोएट्री। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अब सेकंड क्या था हमारा, महानुभव पंथ। महानुभाव पंथ, ठीक है। यहाँ पे ओके, यहाँ पे एंड एक यहाँ पे। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू राइट, संत, रीजन, वर्क और कंट्रीब्यूशन। चक्रधर स्वामी, चक्रधर स्वामी, महाराष्ट्र, founded महानुभव पंथ। मैम भट्ट, महाराष्ट्र, लीला चरित्र, महादंभ, महाराष्ट्र, दावले, केशोबा, महाराष्ट्र, सूत्रपाठ, दृष्टांतपाठ। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। थर्ड हमारा क्या था, सिखिज्म। संत और गुरु and contribution. First, Guru Nanak founded Sikhism, preached quality. Guru Gobind Singh tenth Guru declared Guru Granth Sahib as Guru. Then Guru Granth Sahib, Holy Book of Sikhs. Screenshot ले लो. Okay, next question हमारा. Write about it your own words. Sant Kabir became renowned sant in Bhakti movement. Okay, so Sant Kabir was one of the most influential saint of the Bhakti movement.
He rejected, he rejected rituals, idol worship, caste discrimination, and blind faith. According to him, according to him, truth itself is God. He preached equality of all equality of all human beings, and strongly criticized orthodox practices in both Hinduism and Islam. By using simple language, understood by common people, and he promoted religious harmony and unity, which made him widely respected. स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. The impact of Mahatma Basaveshwar's work on society. Mahatma Basaveshwar played a major role in reforming society in Karnataka. He opposed the caste system. He opposed the caste system and promoted equality and dignity of labor. His famous saying, Kave Kailash, thought that work is worship. He encouraged women's participation in religious discussion and spread his idea through Vachana literature in Kannada. His movement created social awareness, reduced discrimination, and strengthened moral value in society. स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग. गुरु गोविंद सिंह, संत
मिर्ज़ा, एम से ओके, मोइनुद्दीन, मोहम्मद, एक सेकंड यहाँ पे क्या आएगा, आई डोंट नो राइट नाउ, देखते हैं हम, पढ़ते हैं फिर से। ओके, यहाँ पे रामानंद, यहाँ पे कबीर, एंड यहाँ पे सो दिस इज द लेसन, दिस इज क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे हमारा होता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेसन देखिएगा, तब तक के लिए पढ़ते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।